कश्मीर लाइफ के आज के इस शुमारे में आपका इस्तकबाल है। आज के इस शुमारे में हम एक अहम मौजू के तहत बात करने वाले हैं। जैसा कि आप भी बाखबर होंगे कि आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी को हर साल आलमी सतह पर कैंसर डे के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुद्दा और मकसद यही है कि जो कैंसर के हवाले से आज भी लोगों में डर बैठा है, इस ताल्लुक से बेदारी आम की जाए और साथ ही इलाज जो है हर खास और आम तक पहुंचाया जाए। ये कैंसर बीमारी आज के डेट पे ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात जो है इसी से दर्ज किए जाते हैं और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि लोगों में आज भी उसी तरह से कैंसर के हवाले से खौफ बरकरार है जिस तरह से पहले हम देखा करते थे। अगर हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 1994 से ऐसा कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि कैंसर की केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ पिछले 3 सालों में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 39,041 केसेस है और साथ ही साथ ये भी बताए गए 22,000 अमवात कैंसर की वजह से ही रिपोर्ट किए गए हैं। तो यही कहा जा सकता है कि सूरत हाल इस ताल्लुक से तशवीशनाक है। आज के इस दिन पे हम एक खास मेहमान से बात करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ रहेंगे आज के इस सेशन में साबिक एचओडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी स्किम्स प्रोफेसर शेख एजाज अजीज। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइव की दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया मैडम, थैंक यू। As of today, we can safely say that cancer is the #1 leading killer in the world as far as cancer deaths are concerned. पहला सवाल जो मेरा रहेगा वो यही कि चूंकि आप साबिक एचओडी रहे हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी स्किम्स में, जब हम आज के डेट में कैंसर के हवाले से बात करते हैं, आज भी उसी तरह का टैबू बरकरार है। लोग आज भी इस बीमारी से डरे हुए हैं। इतने सालों के बाद भी आज भी इस डेट में हम क्या देखते हैं कि ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं मिलता कैंसर का जिस तरह से लोग इस खौफ से निकल सके। आज भी लोगों में वो खौफ बरकरार है। इसकी क्या वजह है? देखिए मैडम, पहली बात ये आपको बताऊं कि जो भी चीज हम कहीं से भी शुरू करें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज और मैन पावर चाहिए जी। और जब हमने इन तीनों चीजों को प्रोपोर्शनेटली डेवलप किया जी। कहीं भी कश्मीर में, इंडिया में, तो आपको ये नजर आएगा कि चीजें प्रोग्रेस कर रही हैं, अच्छी हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। हम ऐसे स्टेट से हैं जो पेरिफेरली प्लेस्ड है और यहाँ जी कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का जो है उसमें हमने टू लार्ज एक्सटेंट तरक्की की, क्योंकि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो था हमारे यहाँ, इनिशियली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में ही सिर्फ कैंसर का इलाज होता था। मेडिकल कॉलेजेस में तो कर्सरली वो देखा करते थे, लेकिन अब एज ऑफ टुडे all the medical colleges, including the newer colleges, have oncology wings. That's one. And number two is कि Institute of Medical Sciences still remains the premier institute of cancer care and cancer treatment. अब ये है कि प्राइमरीली कैंसर का जो इलाज आजकल होता है वो या रेडिएशन से या सर्जरी से या दवाइयों से, जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, उससे होता है। तो वहाँ इंस्टीट्यूट में हमारे को, जैसे आपने फिगर्स बोले, जैसे आपने नंबर्स बोले, वहाँ हमारे पास रिसोर्सेज तो थोड़ी इतने बराबर नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो मिसाल हमें बेड स्ट्रेंथ वहाँ चाहिए, तो वहाँ हमारे पास इतने बेड्स नहीं है कि हम पेशेंट्स को एडजस्ट एकोमोडेट करें, ट्रीट करें। तो लिहाजा there is always a crunch, and therefore one has to actually expand it in a manner so that it befits जो हमारे figures हैं, जो हमारे admissions हैं, जो हमारे newer cases हैं, जो हमारे उनकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और जो हमारे उनको इन्वेस्टिगेटिव टूल्स का ये इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, तो उसके हिसाब से हमें हमारी बेड स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूं कि हमने यहाँ
एक तो हमारा एस्टैब्लिश रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट है यहाँ इंस्टीट्यूट में, जी जी। इसके साथ साथ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी भी है, जहाँ सर्जरीज करते हैं, कैंसर सर्जरीज, और एक्सक्लूसिवली और कुछ नहीं करते। और तीसरा कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, जहाँ नॉट ओनली हम ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं विद कीमोथेरेपी, एट द सेम टाइम हम वहाँ ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक नोवल मेथड है ट्रीटमेंट का, वो भी हमने स्टार्ट किया पिछले 7-8 साल से। और उसके साथ साथ हमने अपना मैन पावर बढ़ाने के लिए यहाँ, इनफैक्ट आपको ये सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि हमने यहाँ डीएम प्रोग्राम जो मेडिकल ऑन्कोलॉजी में है, वो डीएम प्रोग्राम मेडिकल ऑन्कोलॉजी में एमसीआई से अप्रूव करके पिछले 8-10 साल से हम अपना डीएम प्रोग्राम चला रहे हैं। और उसमें हमने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट प्रोड्यूस किए। These and what we call in Kerala, these are the places where you have DM courses, and Srinagar has become another. This is 8 years back. So उसके साथ साथ हमने resources को भी ये किया। हाँ, अब there's a great gap between what is our requirement and what is our what we call need. So therefore what I feel is that you have to expand it. हमारे को पीछे इन्होंने एक रीजनल कैंसर स्टेटस अकॉर्ड किया उधर इंस्टीट्यूट में, और उसकी वजह से कुछ बेड स्ट्रेंथ बढ़ी, बट इट्स एक्सट्रीमली inadequate, and I'm sure that with the passage of time the higher authorities, the higher ups will grow. At the same time, ये साथ साथ होके भी, since now I superannuated from that place, we have to develop a private sector. Because I'm not saying that everybody should come to a private hospital, but we have to have a private sector developed in a manner which will basically run parallel with the government sector and effort to deliver the treatment and care. दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से जो आपकी ओर जाएगा वो ये कि जो कि कैंसर के कई अक़साम हैं, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो मेल्स में बिलखुसूस मर्द हजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है स्टोमक कैंसर पहले नंबर पे, और जो ख़वातीन में पाया जाता है वो कोलोरेक्टल कैंसर के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर भी। इसके अलावा कितनी ऐसी अक़साम है जो शायद हमें मालूम नहीं। आपको थोड़ा करेक्शन करूंगा कि पुराने वक्त में हमारे को ये पता नहीं था कि हमारे कैंसर्स क्या हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इनकी डिटर्मिनेंट्स क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। उसके होते हुए फिर हमने यहाँ उसको बोलते हैं रीजनल कैंसर सेंटर में कैंसर रजिस्ट्री एस्टैब्लिश की। कैंसर रजिस्ट्री हमने एस्टैब्लिश की, तो कैंसर रजिस्ट्री एक्चुअली 2 किस्म की होती है। अच्छा। एक होती है हॉस्पिटल बेस्ड रजिस्ट्री, जो हमने हॉस्पिटल्स में मतलब हमने बनाई वो, और वहाँ जो भी केस इंस्टीट्यूट में या नर्सिंग होम्स में या दूसरे हॉस्पिटल्स में होता था उसको रजिस्टर करते हैं। तो बेसिकली दिस इज ए हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री। उसके साथ साथ जो मोर ऑथेंटिक है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन बेस्ड ट्यूमर रजिस्ट्री। अच्छा। पॉपुलेशन बेस्ड ट्यूमर रजिस्ट्री हमारे को तकरीबन 2 साल पहले तक अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और अब हमने सर्टेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड देन ये जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, इनके कुछ लोगों को अपने साथ मिला के, सो वो पेरिफेरी में जाके जहां भी हमारा ये क्या इसका नाम है वो जो हमारे पेशेंट्स आते हैं, तो टू सम एक्सटेंट इट मे रिप्रेजेंट the picture which is basically happening in the community as far as the cancer cases are concerned. So therefore with the passage of time हमारे को जो कैंसर फ्रीक्वेंसी है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जैसे आपने बोला कि हमारे यहाँ मेल्स में स्टोमक कैंसर नंबर 1, जो आपने बोला तो चलो ठीक, मैंने सुना, ये लेकिन कहा गया है 25.2% के साथ। आप मेरी अर्ज सुन लीजिए ना। अब मेरी बात ये है कि जब हमने पिछले
if we talk 50 years back, stomach cancer was #1 cancer in the world, right, Okay. madam? But then with the passage of time, the stomach cancer got the lung cancer. So therefore, now the lung cancer is #1 cancer in the males. So in fact, it is almost at the same level, at the same place in females also, but then in females, breast remains #1 cancer globally. So therefore, you have to see the time trends. We call them in technical words, the time trends in the cancer occurrence, cancer epidemiology. So therefore, you have to look at that also. And then with the passage of time, with the change of lifestyle, with the change of our behavior, our eating habits, smoking patterns, and then environment in which we are living, the things change. And therefore, what you tell me ki stomach cancer #1 cancer hai among males, it's not like that. We will still say that in males, the #1 cancer here in Kashmir is the lung cancer. That's one. Okay. And number two, what you said in females, well, breast will be still the #1. But if you talk of the females vis-a-vis in rest of the India, so हमारे यहाँ females cancer cervix एक जगह होती है, वो ladies में होता है, तो cervix is the #1 cancer. So therefore, the epidemiology varies with the time and distribution and what the place where we are. So it has many correlates. Therefore, what we say is that here in Kashmir, that we have got breast cancer as #1, and then we have to see another what you call segment of our population, which is children, which is children. We call them childhood cancers, and those children have form a substantive portion in the cancer occurrence. And in children, the commonest cancers which we have actually are the blood cancers. Although #1 cancer among children, we'll be talking about in first 5 years of life. Okay. The first cancer would be the brain tumors. The second cancer would be the blood cancers, leukemias. And then the third one would be the pediatric solid tumors. So you have to see in every segment of the population what is the type of cancer, and then how are its frequencies changing, and how we register them, and then eventually then you strategize. इसी तरह से जो जैसे आपने बोला कि मतलब colorectal cancer, yes, with longevity and with the eating habits and with whatever we'll say that subsequently. Yes, in elderly people we come across more often colorectal cancer is the one. But I will tell you, after the age of 70, the what you call the frequency of one cancer is called prostate cancer. The prostate cancer gets on, and that the prostate cancer becomes #1 cancer at 80 years of age. So therefore, that is to be seen. But तो ये जो आंकड़े आप बताएंगे या बता रहे हैं या हम सुनते हैं, they will change with the age of the people, population cohort, at the same time the sex of the people, at the same time the place. True. So therefore, we have to actually see it in that prism, that what is the occurrence, which are the cases, and how do they form the eventual epidemiological correlate. जी, जिस तरह से आपने कैंसर के अक़साम के हवाले से भी बात की, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कि कई सारे अक़साम हैं, जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, लंग कैंसर हो, कोलोरेक्टल कैंसर हो या स्टोमक कैंसर हो, हमें ये बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा कैंसर है जो ट्रीटेबल है और कौन सा ऐसा है जो ट्रीट नहीं हो सकता? एक दफा हमने ये सुना कि कैंसर है, उसके बाद वो शायद ट्रीट ना हो सके, ऐसा? नहीं, कोई कैंसर नहीं है अभी तक जो आप ने सोचा या समझा होगा या जो आपने सुना होगा, जिसको ट्रीटमेंट नहीं है। जी। अब हमारे ट्रीटमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं, इंटेंशंस होते हैं। एक होता है ट्रीटमेंट विद एन इंटेंशन टू क्योर,
एंड एक होता है ट्रीटमेंट विद द इंटेंशन टू पैलिएट. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर वी फेसिंग. पहले मैं आपको इससे पहले ये बताऊं, जो हमारे कैंसर्स हैं, अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे कैंसर्स को, हमारे पास एक, उनको बोलते हैं पीडियाट, इनको बोलते हैं सॉलिड ट्यूमर्स. ओके. सॉलिड ट्यूमर्स हो गए जो हमारे आज़ा हैं, मतलब लंग है, ब्रेस्ट है, स्टमक है, किडनी है, पेनक्रियास है, इनको सॉलिड ट्यूमर, जो ट्यूमर्स उनसे उठे उनको बोलते हैं सॉलिड ट्यूमर्स. एक अच्छा. ये, और दूसरा आम कैंसर जो होता है उसको बोलते हैं लिम्फोरेटिकुलर मैलिग्नेंसीज, लिम्फोमास, लिकीमियास, और दूसरे लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम की मैलिग्नेंसी जो आम. जी. नंबर 2. और नंबर 3 किस्म के कैंसर जो होते हैं, मैंने बोला जो बच्चों में होते हैं. अब जो आपने सवाल पूछा कि कौन सा कैंसर ट्रीटेबल है, कौन सा कैंसर क्योरेबल. देखिए, जो हमारे पास लिम्फोरेटिकुलर मैलिग्नेंसीज हैं और जो ब्लड कैंसर्स हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें हम, दे कम very suddenly. A person's ओके. one day all right, next day he develops blood cancer. जी. और इसमें कोई स्टेज नहीं होता, एक्सेप्ट एक किस्म का ल्यूकीमिया है, CLL, उसमें स्टेज होता है, लेकिन स्टेज कोई मायने नहीं रखता. और ये जो ब्लड कैंसर्स हैं, ये इनवेरिएबली क्योरेबल. क्योरेबल मींस दैट with the treatment they get all right. So are lymphomas. To a larger extent, when we treat them, तो इनका क्योर हो जाता है. And we have lots and lots of patients who are having this disease and they are living without treatment for more than for 10 years, 20 years. And I have patients on my follow-up who are in now, they started with their disease in their childhood. मैं आपको एक मिसाल बोलूं, मेरे पास एक बच्चा आया तकरीबन 20-25 साल पहले. अच्छा. तो ही हैड, बहुत आए, लेकिन अब एक ही मिसाल में आ गई जहन में. तो वो treated him, he is all right. Okay. And eventually he would just follow me, and then he grew and became, he said that Dr. Bas Banyos Patwar. And then after that he became a higher up, he is a Tahsildar. Great. So therefore what I am trying to tell you, they are contributing productively to the community, and they are absolutely all right. This gentleman, this boy is perfectly okay. So many instances. I have patients whom I have treated earlier. They are, in fact, one of them is a IAS officer. He जी. works outside state. One of them has done recently KS. जी. And then lots and lots of instances where many of them are engineers. तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसा नहीं होता, लेकिन अब ये है कि प्रपोर्शन क्या और ये ट्रीटमेंट क्या. नंबर 1, अब ये जो पीडियाट्रिक्स, जो अब सॉलिड ट्यूमर्स, मैंने बोला सॉलिड ट्यूमर्स का ये मसला है मैडम कि उनमें स्टेजेस होते. वी हैव गॉट, जनरली हम उनको बोलते हैं स्टेज, अर्ली स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज एंड लेट स्टेज. अगर वो कैंसर्स हमें डिटेक्ट हो जाए अर्ली स्टेज में, अगर हम ट्रीटमेंट उनको करेंगे, वो क्यूरेटिव होगा, और फिर उसके बाद वो they will again become as healthy as anybody else in the community. Fine. And they will be fit and fine. And आपको मैं बताऊं, मतलब just एक मिसाल देता हूं. यहाँ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे नीलम संजीवा रेड्डी. अच्छा. तो while he was president, he had to go to US for some official work. अच्छा. As president of India. जी. He was a smoker. तो इनका ये प्रोटोकॉल होता है कि इनको बाहर ओवरसीज जाने से पहले इनका मेडिकल चेकअप होता है, VIPs का. तो he was detected to have what we call a coin lesion in his lung, and then eventually it was found to be a malignancy. This was treated, and he was all right, and he lived around 17 years later to that. He was fit and fine, and there was no problem with it. So in short, what I want to tell you is that if we detect these solid tumors earlier, in the earlier stage of their presentation, I'm sure that we'll be able to deliver a treatment which is curative. We'll be able to deliver a treatment which is not radical. Radical means ये कि suppose हमें किसी आदमी को, suppose we find he has got a, suppose मैं आपको बताऊं,
किसी आदमी को बाजू में ट्यूमर है, there's a अच्छा। tumor in his arm, in the bones. Now, if we detect it early, we will just resect that area, that bone, and then finish. But suppose he comes in a later stage, we may have to remove his whole arm, जी जी and जी। still we not be able to. So therefore, that is called a radical treatment. So हम्म once a person comes with an advanced stage of disease, the treatment is essentially palliative, हम्म and palliative would mean that his quality of life should not get hampered. He should हम्म, not have pain. He should be comfortable. He should eat well. He should move जी his bowels and urinate properly. And then he should live a normal, pain free life. जी So जी। that is also a treatment which is with intention to palliate. And हम्म at the same time, once we treat with the palliative intent in an advanced disease, the idea is not only to improve the quality of life, the idea is the longevity also. Because suppose हम्म we treat, there are two groups of patients, एक पर्टिकुलर डिजीज, सपोज किसी डिजीज स्टमक स्टेज 4 पेशेंट आया, दो पेशेंट्स हैं स्टेज 4 के, एक को हमने ट्रीट किया, एक को ट्रीट नहीं किया. जिनको स्टेज 4 ट्रीटमेंट किया हमने, he will live longer, maybe a few months only, than the person whom we did not treat. So therefore, what I am saying is that once we treat them with the palliative intent, it's not only to improve their quality of life, it is also to improve their longevity. हम्म। दरअसल ये सवाल पूछने का यही मकसद है मेरा कि जब हम आज भी देखते हैं, जब कैंसर का नाम सुनते हैं तो उनको लगता है शायद कैंसर है तो शायद अब बचने के चांसेस तो है नहीं, अब ये शायद ज्यादा देर तक रह नहीं पाएगा, जी नहीं पाएगा। और इस तरह से भी हमने देखा, अक्सर ये भी देखा जाएगा, मेरे मुशाहिदे में भी कुछ ऐसे केसेस आए कि उनके कैंसर का लास्ट स्टेज था, लास्ट स्टेज में कुछ सिम्टम्स जाहिर होते हैं तो फिर वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर्स भी उसे होपलेस केस ही करार देते हैं। ये क्या है कि लास्ट स्टेज पे एक पेशेंट को इस ताल्लुक से इल्मियत होती है, बराबर वो आगे बराबर जो बराबर. स्टेज होती है उस ताल्लुक से बात नहीं होती। जी जी जी। Agreed, madam. What I actually want to tell you is that we need to हम्म actually, first of all, create an awareness among people हम्म for prevention of cancer. हम्म So therefore, what we are saying is there are certain cancers which can be prevented, and it is said that if we have a prevention of cancer uh, uh, principles applied, two-thirds of cancers are preventable, especially ये जो solid tumors हैं, जी preventable. अच्छा, अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा कोई गैजेट नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई बायोमार्कर अच्छा नहीं कि आदमी को देख के वो बोलेगा कि, बिकॉज पर्सन ऑल्सो टेक्स इट बिकॉज ही थिंक्स दैट ये सब कुछ नॉर्मल है, तो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तो हम्म कोई ऐसी वार्निंग साइन नहीं होती कैंसर के मुतालिक. लेकिन मैं आपको बताऊं, तकरीबन 20 साल पहले WHO ने वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर बताए थे. तो वो मुझे आजकल के वक्त में मुझे लगता है कि वो इरेलेवेंट है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगा इन लोगों के लिए कि अगर कोई आदमी, सपोज ही पर्सन इज हैविंग अ नैगिंग कफ, अब उसको इतनी खांसी आती है और वो बैकग्राउंड में हम्म मोर देन 40 years of एज है और उसको खांसी है और हैज बीन अ स्मोकर, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट दिस पर्सन, once we see, he should this is a warning to him. Similarly, अगर किसी आदमी को कहीं से भी, किसी भी ऑरिफिस से, especially if he is crossed 40-50, किसी भी ऑरिफिस से खून आए, नाक से आए, मुंह से आए, थूक से आए, उल्टी जी के साथ आए, बड़े पेशाब के साथ आए, या जनान मोहन लेडीज को प्राइवेट पार्ट से आए, कहीं हम्म भी, या स्किन से आए, तो he should immediately, दिस इज अ वार्निंग. अच्छा थर्ड जी है कि अगर किसी लेडी को उसके ब्रेस्ट में अगर उसको एक रसोली या एक lump detect होता है, she should हम्म immediately come and go to the doctor and get it investigated. At the ओके same time, ऐसे ही लोग जो हैं, सपोज कोई 40 क्रॉस करके स्मोकर है, तो उसका वॉइस चेंज हो गया, his voice becomes hoarse, तो वो भी एक वार्निंग साइन रहती है, कैंसर वार्निंग साइन होती है.
इसके साथ साथ हमने जब ये शुरू किया था, तो दैट टाइम वी एक्चुअली पुट एन अमेंडमेंट एंड वी सेड दैट कि अच्छा, कभी किसी को ये स्किन पे मोल होता है जिसको हम कश्मीरी में लक्षण अच्छा, बोलते हैं। तो उसमें अगर कभी खुजली हो जाए, वो बिल्कुल रेड पड़ बिल्कुल। जाए या खून आ जाए, he should immediately go. It is painful. He should immediately go and contact the doctor. फिर हमने उस वक्त we said because was locally important to us. हमारे यहाँ एक किस्म का कैंसर जो होता है वो रिलेटेड टू कांगरी था। अब ये थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया। उसको बोलते हैं कांगरी कैंसर। एक्चुअली इट्स अ बर्न कांगड़ी इंड्यूस्ड कैंसर। कैंसर। तो हमारे कांगरी कैंसर, तो इट्स एस्टैब्लिश लिटरेचर में वी हैव एक्चुअली put lots of this thing on inputs on that. तो ये अब आप देख लीजिए, अगर आपको मतलब ये आपने देखा होगा कि हमारी जो माएँ बहनें हैं या बुजुर्ग हैं, तो वो पुराने जमाने में कांगरी या एक किस्म की होती थी, बिकॉज द इफलास था, गुर्बत थी, लाचारी थी। दे वुड नॉट हैव कांगरी, उसको बोलते थे मनन। इट वुड नॉट बी द विलो आउट, जो कांगरी के बाहर जो विलो वर्क का केस होता है, वो नहीं, ये सिर्फ वो पोर्सलिन का वो कतरी हुंदू होतो ससान सु। So they बिल्कुल। would use that. They would use that. So idea was to basically to have more and more heat, and they would get what we call them erythema abegni. उनको बोलते हैं कश्मीरी में नार तज। हम्म। You must have seen, that's like a net-like thing, dark यस। colored net-like. You must have seen many people developing that. Subsequent to that, this erythema acne burn marks become ulcerated. उनमें ओके। उनमें itching हो जाती है। फिर वो आदमी उसको, he likes to scratch it and eventually produce an ulcer, and eventually in the longer run it becomes a cancer. So हमने बोला कि अगर किसी आदमी को ये इर्थीमा एबेगनी जो बर्न मार्क है वो है और उसमें इचिंग है, तो he should also जी। immediately go and visit the doctor for this thing. लेकिन आप देख लीजिए मैडम जी, अब हम यहाँ इस वक्त में 2022 में हम इस स्टेज पर आए हैं कि हम अब कैंसर डायग्नोसिस को we set the diagnosis of cancer in tumors on molecular level, on genetic level, and on what we call certain cytogenetic chromosomal level. So therefore जी। ये जो वार्निंग्स मुझे लगता है दे आर इरेलेवेंट। जैसे मैं आपको मिसाल एक बताऊंगा, एक हमारा एक देयर इज अ कैंसर कॉल्ड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। अच्छा। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर होता है जो अमूमन मिडिल एज मेल्स में होता है, फीमेल्स में भी होता है। Sometimes it can happen in younger age, but very rarely. But then what I am saying is that उसका diagnosis, अब we have to see the chromosomes, जो सेल में अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको डायग्नोज करता है। क्रोमोसोम्स को उसमें ट्रांसलोकेशन होती है, तो वो देखते हैं। सो द रेलेवेंस ऑफ दिस डायग्नोसिस vis-a-vis the diagnosis कि किसी को खून आए, इट्स अ वेरी वेरी वेग थिंग। सो देयरफॉर मैं इन शॉर्ट आपको ये बोलना चाहता था कि cancer diagnosis has improvised, colossally. At the same time, ओके। we have to actually have a preventive, aspect of cancer more and more, known to people. जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये बातें कोई सुनेगा, naturally, definitely he will think of, yes, I should try to do many things which are cheap, which are easy, and which are affordable, and then I would do it, and then I will get freedom from this disease. इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि there are certain high risk individuals where we have to do a cancer screening. What we call is a secondary prevention. एक तो अच्छा। प्राइमरी प्रिवेंशन हो गया कि हमने, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने बोला कि कैंसर सर्विक्स जो हमने इंडिया में बोला वो आम है, या ऐसे लंग कैंसर है जो स्मोकिंग से होता है। अगर हम स्मोकिंग को अबंडन करें, प्रिवेंट करें, हाँ। तो कैंसर की शरह कम हो जाएगी। जी। तो ये मैं
जबानी नहीं बोलता, मैं इसके लिए आपको फिगर्स बता के ये बताऊंगा कि 2014 तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में people would smoke and then males and females, they would smoke and then they would get cancer. Fine. Once these people were educated, they were given the what we call the proper counseling. It has been seen that down 2014, the proportion of cancer cases has decreased among males, and therefore now 2014 downwards, the curve is still showing a dip, small dip among males as far as lung cancer is concerned. But it continues to grow in females. I tell you my observation, both in America and Europe, I have seen that it is extremely common and rampant in Europe, extremely common in what we call certain parts of India, smoking, and then but then what I saw in Europe, this is tremendous. They are females are, I don't know how to describe it. They are very chain smokers, and then I don't think they have any let up on that, although they know it that it is injurious to them. So therefore primary prevention में ऐसा होगा कि जो हमें पता है स्मोकिंग से कैंसर होता है, विल प्रिवेंट स्मोकिंग. हमें पता है, जैसे मैंने बोला आपको सर्विक्स का बोला, एक वायरस होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से सर्वाइकल कैंसर होता है. तो अगर सर्वाइकल कैंसर को हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन दे दें, जो हमने केरला में किया, हमारे मुल्क में, एंड वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर्स बिकॉज इट हैज हेल्प्ड. सो देयरफॉर कैंसर स्क्रीनिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट. एट द सेम टाइम जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसमें आप का ज्यादा रुचि होगा कि फीमेल्स का ब्रेस्ट का ये जो है, देयर इज बेसिकली अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी which has guidelines for doing screening, cancer screening in females of the age beyond 45 years of age. So they advise mammography every 3 to 5 years in females, normal females. So idea यही है कि that we detect this disease at an earliest possible level, so that we are able to detect it, treat it, and the treatment would be very, very minimal. It will not cost a lot of money. It will not be radical. It will be cosmetically good, and then it will be acceptable to the patient. And above all, जो आपको मतलब जो आप मुझे बोलते हैं कि हमारे पेशेंट्स को ये स्टिग्मा लग गया कि कैंसर हो गया तो फिर उसको लेबल डेथ की हो गई, ऐसा तो नहीं है मैडम. ऐसा तो होना नहीं चाहिए. बदकिस्मती ये है हमारे लिए कि we are not able to actually propagate our knowledge to common people. Because मैं आपको बताऊं, आपको भी आपने देखा होगा, आपके अतराफ में, आपके घर में देखा होगा, जैसे 50 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस यहाँ बहुत कॉमन था कश्मीर में. और जिस आदमी को ट्यूबरक्लोसिस होता था उसके सामने लोग बैठते नहीं थे, उससे डर जाते थे लोग. एंड ही वुड बी अ स्टिग्मेटिस पर्सन, ही वुड कैरी. तो यही हाल आज कैंसर का है. लेकिन आज अगर ट्यूबरकुलोसिस किसी को है, नोबडी इज बॉदर्ड, बोलता है ऐसे ही चलता है काम चलता है. तो देयरफॉर व्हाट आई एम सेइंग इज, ये ना समझिए कि कैंसर कोई ऐसी चीज है कि जिसमें इट इज सिनोनिमस विद डेथ. ऐसा कुछ नहीं. मैं आपको बताऊं, देयर आर सर्टेन डिजीजेस वी नो, जैसे आपको एवरीबॉडी नोज ब्लड प्रेशर. It's so common. It's lifestyle related disease. And then ब्लड प्रेशर के लिए हम दवाई खाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है. हम दवाई नहीं खाएंगे, ब्लड प्रेशर फिर आएगा. तो we are not curing it, except there are some 5% of blood pressures where we could have a cause and we would treat it. But 95% of essential hypertensions, we have to give them treatment. It will get controlled and then things will go good. लेकिन हम कैंसर में हमारा इंटेंशन होता है कि wherever we see a particular kind of cancer, and then where we see that the stage is early stage, I think we are intending to treat this patient with cure, and I'm sure that will become most useful and valuable for all of us and the community in particular. Which I said that
हमारे पास जो भी हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना खराब भी नहीं है जितना if you see rest of the places in our country, we are definitely better than them. I happen to see the cancer delivery program in a country which is the richest country in Africa, South Africa. Believe me, that country has got a medieval sort of what we call cancer delivery. But that doesn't mean that we have to be complacent. We have to actually try and effort towards perfection. And I'm sure that with the passage of time, with initiatives from our media people, our paramedics, our social workers, our NGOs, I think we should be able to promote the what you call message of cancer prevention, and this perhaps is most important and relevant for the disease management. And we realize that this cancer is not a disease which is stigmatized. I think we should review our thinking and knowledge. जैसा कि मैंने अर्ज किया आगाज में कि माहिरीन का कहना है कि 1994 से यहाँ कश्मीर में बिलखुसूस कैंसर के इस डिजीज में इजाफा होता जा रहा है और पिछले 3 सालों में ये भी कहा जा रहा है 22,000 अमवात फकत इससे दर्ज हुए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। ऐसे में जब हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, जो कि चेंज हुआ है हमारा खाने पीने की आदत से लेके जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, क्या हमें हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, वक्त की जरूरत है, ताकि इस तरह की बीमारी से बचा जा सके? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये जो आपने बताया कि हमारे जो कैंसर्स यहाँ हैं वो हम डिटेक्ट कर रहे हैं इन एन एनहांस्ड मैनर, कैंसर फ्रीक्वेंसी हैज गॉन अप। लेकिन आप इतना भी सोच लीजिए कि अब हमारे पास एवेन्यूज एंड गैजेट्स और वसाइल हैं कि हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, एंड देन इवेंचुअली वी नो दैट दिस इज कैंसर. So therefore, if we see enhanced numbers and enhanced number of people, पुराने ज़माने में है इमसास सास इमान सास, and then with that saas only he would go away, he would die. But now we know he has a cancer. So therefore, what we are actually saying is that we have more what you call facilities available, infrastructure available, diagnostic facilities available. We have access to high-end investigations. Believe me, which would be molecular based, would be gene based. In fact, I don't have. I would even, in fact, sometimes in another meeting we will discuss about genetic diagnosis of cancer. So, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो कश्मीर में actually we are in a situation which is basically different than rest of the country. We are at the peripheral place, is the northern part of the country, and at the same time our geography is not, what we call as we are a cooler place, colder place, and therefore what we say is that we are different. There is a ethnicity is our ethnic background. We are thought to be descendants from Aryans which have moved from Afghanistan, Iran, and other areas, and then they came and settled here. So therefore we are ethnically and genetically perhaps different kind of people, and therefore we have to see our own cancers in the way they occur. Like I tell you, there's a disease called GI lymphomas, gut lymphoma, which is actually a type of disease which we see very frequently here in this part of the country than rest of India. Similarly, if we talk of certain adverse effects of drugs, which we see in a profile, that profile is different for patients rest of the country than we have. Some side effects which are encountered frequently here are not seen commonly in India. So in the country. So therefore, you have to be very
cognizant of the fact. But one thing you are right that our lifestyle has changed. You see, I tell you, smoking is very, very common in our community, and I time and again keep on saying that we have to abandon it, and we have to hit the right people. The target, our target, should be the people who, once they contract smoking, and I'm telling you, most of our young boys, most of our youngsters, they get smoking because of somebody is a friend, somebody is going to school. Father gives his son cigarette day back. सही So है. he sees that. So it's a motivational factor. At हम्म, the same time, what I tell you, there's a person sitting in the room in winter, all the windows are closed, and हम्म, he's smoking a hookah. And this is happening. And then you have got a sister or a mother who is pregnant. And then it's not only that the ill effects of the smoking are done to those people who are around. The child which is in the womb of this lady also has the side effects of it. Therefore, what I want to tell you is, and हम्म, then we spend huge amounts of money. You'd be surprised. Somebody tells me 250 crores. Somebody tells me 5 crores. That we consume so much of cigarettes a month in Kashmir. That much of money we spend on this. And why सही do है. we do it? Nobody knows. And therefore, what we are actually try to say is that we should actually do ways and methods to hit this sort of a menace True. very effectively, energetically. There are legislative measures which government has taken that we should abandon smoking at public places. This is not followed. It vehicles in public transport, it's not followed. When the driver himself is smoking, तो आप क्या कौन सी कानून बताएंगे उसको? बिल्कुल. So therefore, what I say is that we have to abandon that. And at the same time, there are certain other types, like what I said is this breast cancer. Suppose we talk of breast cancer, and we give them advice, first of all, which are the target age groups, and if there was a family history of breast cancer, because we see certain families, they have familial cancer. So we have to actually take them as high risk people, and we have to educate people with self breast examination, and that would be a cheaper and effective tool in giving some preventive tips. We should take fruits and vegetables in abundance, kasrat se, because they contain antioxidants. And अच्छा. if you read our holy books, Quran Pak, अंगूर और अनार जो है, जी. it contains lot of antioxidants, हम्म, and those antioxidants are anti-cancer. So therefore, what we say is that we should take fruits, vegetables in bulk. We should हम्म. avoid what we call another thing, which which I come across once I cross the city. Lot of barbecues, Yeah. lot of barbecues. And I tell you, I Exactly. tell you, I tell you, we have certain amino acids in meat. I mean, in meat, there are basically proteins are made up of amino acids. So there are amino acids made up of जी. tryptophan and valine. What's happening is that these, हम्म, once we put them to the high heat, they these amino acids become what they make products which are called pyrolysates. Pyrolysates. So therefore, अच्छा. those pyrolysates are injurious. Those pyrolysates contain जी. what we call nitrosamines, which are basically जी. cancer-causing, अच्छा. substances. So therefore, people keep on taking this as, and I tell you, young people, I see, because in the once I am coming from a hospital, I see people doing it and taking it. I'm not against them, but I say that person is smoking at the same time he is eating this barbecue and this all, and then you must have seen we are getting the episodes and incidences of young cancers, young people getting cancers, हम्म, young certain deaths, and then many other things. I thought we have to be
what you call preventive. We have to eat a lot of fruits, we have to eat a lot of vegetables, and we have also to ensure that we do not unduly fry, unduly cook food, which is basically injurious. Because you see our cuisine, which you now you will tell me, Yeah. Dr. Saab is telling me something which is a terrorist act, is that Wazwan. You Exactly. know, you True. know, Wazwan, they do everything possible. Apart from their secretions, I tell you, they imchitrawan ranga. They add certain coloring agents, Yeah. so which are injurious. They keep on boiling it, keep on boiling it. It's not that our elders would not take Wazwan, but now you are adding certain chemicals to the. Ajinomoto as well. Yes. To So it. therefore, so Mhm. therefore, therefore that becomes harmful. And then you have lots of proteins, and high protein intake is Mhm. injurious, and it is risky for many cancers, especially if we talk of in females. There's an endometrial cancer, bachadanian cancer. So it's Mhm. it's it's believed that if people consume a lot of proteins, if people are obese, if people do not do exercise, if people do not do exercise, therefore they are the people who are actually going to have problems and high risk. At the Okay. same time, what you say is that our mobility has become less. We always use cars, and you see in city you would see hardly anybody walking, True. hardly anybody using cycle, Yeah. and then everything is on remote. You will not Mhm. in earlier days when I was a child, we would have Mhm. TV. Tatus pe Mhm. which one here actually antenna goi atha goi itke Lahore na chuni man ya falan Mhm. station na chuni. So therefore, what I am trying to say is that we have become immobilized. We sit on a place in the morning and evening Mhm. till evening. We are just sitting at a place, eating That's and right. sleeping Yeah. and doing. So that sort of a what you call lifestyle has Mhm. to be abandoned. And I'm sure that those Yeah. things will help us in a manner, so that we are more healthy. And apart from that, what we should consume what we call proteins as well as fats in moderation, and Mhm. take lot of fruits and vegetables, and I think do a good exercise, Yeah. abundant smoking. Then what we call, there are certain infectious agents like, see, hepatitis is one which we encounter, and then sometimes hepatitis, if it becomes chronic, it can cause sometimes a liver cancer. So once we immunize a person against hepatitis, we are preventing a cancer. So therefore, those are the issues. I don't think in this one program we can speak on a particular True. issue, True. but the Ji, way ji. you are basically asking me, I am trying to say just a bird's eye view. But one more thing which actually I wanted to share with you is Sure. this year's theme of getting a uniform cancer treatment, and we should not have actually what you call heterogeneity in the Mhm. cancer delivery, although which is not seen very often here in this part of country. Whatever government hospitals are giving cancer treatment, and most of it is free. But I seen in US, I seen in Europe, I seen in Gulf that Mhm. there's a huge human right violation. If you have got a health insurance, you Ji. are what you call what we call you are you have access to the best possible treatment. But Mhm. if you are not having a high health insurance, you're gone. Yeah. You don't even get the care. And then if you are black, if you are white, if you Mhm. are having a non-Arab and Arab, I mean, you'll be surprised to hear this thing from me, Mhm. and I am very Mhm. sure about it. Arab and non-Arab. Arab gets one treatment, non-Arab gets another treatment. Yes. Another And if treatment. non-Arab wants to follow that Arab treatment, the costs are exorbitantly, Mhm. prohibitively very high. Yeah. Yeah. So therefore, what I am saying is that we need to develop a system. We need to Mhm. develop a what you call mechanism, wherein Exactly. there is uniformity in
cancer care treatment, and I'm sure that will help us. बहुत बहुत शुक्रिया। इस ताल्लुक से लोगों को भी बेदार होने की बहुत ज़रूरत है, और आज के दिन का मकसद ही यही है कि कैंसर के हवाले से अवेयरनेस जो है, बेदारी जो है वो आम हो। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने हमें मालूमात दी और अलग अलग जो भी हमने आपसे सवालात पूछे, इस ताल्लुक से पूरी तरह से आपने एलॉबरेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच Thank you फॉर very दैट। much. Thank you. God bless you. Thank you.